So today we are going to start our general pharmacognosy. So pharmacognosy is the again one of the branch of your pharmacy which deals with the study of crude drugs of plant origin. जो plant origin के drug है, okay. So drug is nothing but the any substance either may be synthetic or plant origin or mineral origin. So that is used in the diagnosis, treatment and mitigation of disease. So that is known as drug. So in the pharmacognosy, we are going to discuss about the crude drugs. Crude drugs means drugs of plant origin. So out of that, you should know how many questions they are going to ask you from this part. So in the pharmacognosy, they are going to ask you 10 questions in the GPAT exam. Okay? And they are very much easy questions. So I will today explain you regarding the history, general pharmacognosy, traditional system of medicines, important points on the traditional system of medicines. Okay, and then we will see WHO parameters for standardization of herbal drugs. Okay, leap constants and all that. So today we will try to finish that. So good morning to all. Am I audible? आवाज येते सगळ्यांना? Okay. So general pharmacognosy, right? So use of herbal drugs for the alteration of physiological response or use of herbal drugs as a drug, it is ancient. It was well known from ancient era. So you can say use of herbal drugs, the oldest literature where the use of herbal drugs or herbal herbs for the herb as a medicine, oldest literature is given in the Rig Veda. So Rig Veda and Atharva Veda, so they are the oldest literatures. Out of that, Rig Veda is considered as the oldest literature. इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आया. One of the literature is known as the oldest literature for the pharmacognosy. So Rig Veda is the oldest literature. So in which it was described the uses of herbal drugs as a herb as a medicine. Okay. Then after that, Atharva Veda is there, and after that, Charak Samhita. So after that, Charak Samhita. So I'm taking a very short. I'm not going to explain each and every single point of the history. Everything is not important. Okay. So Charak Samhita. So in that, Charak has described the use of herbal drugs. Okay. So इन 900 BC, BC मतलब वो आपका जो मीनिंग होता है BC का वो नहीं, यहाँ पे BC मीन्स बिफोर ख्रिस्ती. So before Christy or before Christy. So Charak Samhita before 900 BC means 900 before 900 before Christy. So in that also in Charak Samhita there was a description, there was a literature where there was a description of use of herb as a medicine. So this in the Charak Samhita the literature was divided into 8 section. 8 section was there and 150 chapters was there. 150 chapter which describes the around 341 plants which is used as a medicine. But oldest literature is nothing but the Rig Veda. Okay, remember. Now after that, Sushrut Samhita. Sushrut Samhita is also there. So 600 BC, 600 before Christy. So again, in that also Sushrut Samhita also there is a literature. So चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये दोनों भी क्या है लिटरेचर से, जिसके ऊपर क्या है, जिसमें क्या लिखा है यूज ऑफ हर्बल ड्रग्स, यूज ऑफ हर्ब एज अ ड्रग. So चरक संहिता was written 900 BC, so which consists of 8 sections, 150 chapters, and which describe the use of 341 plants as a medicine. In the Sushruta Samhita before 600 before Christy, 600 BC, also describe the 6th section and 186 chapter which describe the 395 medicinal plant which is used as a drugs. Okay, so this is known as the oldest literature. And after that, okay, so initially pharmacognosy was known as a materia medica. After that, so after modification of a lot of literatures, and initially this pharmacognosy was known as a materia medica. There was a Greek physician known as Dioscoride. Greek physician known as Dioscoride. He written one book known as a De Materia Medica. So question आता है इसके ऊपर Dioscoride who written the De Materia Medica. So De Materia Medica was written by Dioscoride. After that, one student of medical hall Germany known as C.A. Sedler, student of
medical of Germany, known as a CA Sidler. This CA Sidler is very important. So he wrote his doctoral thesis, PhD कर रहा था. So he wrote his doctoral thesis entitled Analytica Pharmacognostica. Analytica Pharmacognostica. Okay, and after this, when C.A. Sidler wrote his doctoral thesis Analytica Pharmacognostica, and the C.A. Sidler is considered as the the scientist who coined the term pharmacognosy. So remember, C.A. Sidler coined the term pharmacognosy. This was question in GPAT 2019. C.A. Sidler coined the term pharmacognosy. जैसे होता है pharmacology. Who coined the term pharmacology? Or who is the father of pharmacology? Anybody? Yes, कौन होता है? Father of pharmacology was Oswald Schmidbach. Okay. So he is the father of pharmacology. So like that, C.A. Sidler coined the term pharmacognosy. This was question in GPAT 2019. After that, J. Schmidt. He is from Vienna. He written one book again, Labor der Materia Medica. Labor der Materia Medica. Okay. And nowadays it is considered, okay, is considered to be used in the it is considered to be that he J. Schmidt used first time the word pharmacognosy before Sidler, but Sidler is known as a Sidler is known for that same thing. अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है सी ए सिडलर, ही कॉइन द टर्म फार्माकोग्नोसी. उसके पहले भी ये जे ए शिमिट जो था वियना से उन्होंने कॉइन किया था, ऐसा कंसिडर करते हैं. बट फॉर exam purpose you just write C.A. Sidler. C.A. Sidler coined the term pharmacognosy. Question already आ चुका है इसके ऊपर. Now different countries and their traditional system of medicine. So we have different traditional system of medicine. India has its own traditional system of medicine known as Ayurveda. China has its own medicinal system known as a Campo. In the Greece there is a Unani. Okay, in the Germany there is a homeopathy. In the Tibet it is Amaji, and in the southern India, so there is a Siddha system of medicine. So different countries and their traditional system of medicine. So country first is China. So China has a Campo medicinal system. याद रखना आपको, चाइना का मेडिसिनल सिस्टम होता है कैंपो. इट इज अ ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम फॉर चाइना, कैंपो. ओके, नाउ scientist related with the campo is nobody. Okay, no, nothing is reported. So what is the theory behind this campo medicinal system, how it is based on? So this campo medicinal system is based upon the two things. First one is a force of darkness, and second thing is a force of light. And if there is an imbalance between the force of darkness and force of light, so they thoughts you are suffering from particular condition. So force of darkness is known as a yin, iron, and force of light is known as a yang, yin and yang. So they are the force for darkness and lightness respectively. And in the campo medicinal system, suppose if you are suffering from disease, that means there is an imbalance between this yin and yang. If there is an imbalance between yin and yang, that means you are suffering from disease. So that is a theory behind the campo medicinal system. Now Greece has its own traditional medicinal system. Greece का होता है यूनानी. Unani is the traditional medicinal system for Greece, right? For Greece. Are you able to see the screen? Screen दिखाएगा. Then in India, okay, so Greece has its own traditional medicinal system known as Unani, and the scientist related with the Unani is nothing but the Hippocrates, Aristotle, and Galen. Hippocrates, Aristotle, and Galen. Okay. Now in India you have traditional system known as Ayurveda, and this is the oldest traditional system of medicine. Remember, in India it is the oldest traditional medicinal system. सबका जो मेडिसिनल सिस्टम है सबसे ज्यादा ओल्ड कौन सा है? इंडिया का. India has Ayurveda, and it is the oldest traditional system of medicine, in which there is a use of herb, there is a use of animal product, there is a use of, okay. So India has the oldest traditional medicine system known as Ayurveda, and from Ayurveda only this other systems they have been developed, like Unani system was developed from the Ayurveda only. So some scientists, or you cannot say scientists, some physicians, Ayurvedic physicians,
they were invited over the Greece. Okay, वहाँ पे ग्रीस में गए, फिर वो वहाँ पे उन्होंने कुछ मेडिसिन बोला, तो वहाँ पे उन्होंने बाद में वही मेडिसिन का डेवलपमेंट हो गया, तो उनका लिटरेचर, अपना लिटरेचर उन्होंने उनकी लैंग्वेज में लिखा और बाद में उनका यूनानी बन गया. ठीक है. So homeopathy also consists of a use of herbal drugs. Okay, herbal drugs. Homeopathy is a traditional system of medicine for Germany. So India, Ayurveda. So it is based upon the Panch Mahabhutas and three doshas. So your Ayurveda is based upon the Panch Mahabhutas and three doshas. Okay. त्रिदोषा मतलब इसमें त्रिदोषा मतलब वात पित्त कफ. ठीक है, वात पित्त कफ. So if there is a imbalance between vata, pitta and kapha, so you are suffering from particular kind of disease. Now you just remember these things, there is no need to go in the details, because in the GPAT they are going to ask you only such kind of questions. What is the law behind that theory, that system of medicine? What is the oldest system of traditional system of medicine? Okay, so Ayurveda is the oldest traditional system of medicine. In the Germany you have homeopathy. What do you mean by homeopathy? होम्योपैथी का एक रूल होता है. देयर इज वन रूल ऑफ होम्योपैथी नोन एज अ लाइक क्यूअर्स लाइक. सो होम्योपैथी मीन्स व्हाट? लाइक क्यूअर्स लाइक. सो दे आर बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट लाइक क्यूअर्स लाइक. ओके. नाउ सैमुअल हायनमैन. सैमुअल हायनमैन. So this is the scientist related to this homeopathy. So he invented the homeopathy. Okay. Now the law behind this system is nothing but the simili similibus curantur. Simili similibus curantur. Okay, similibus curantur. Simili similibus curantur. Simply it means like cures like. और उनका ये मानना है कि जो डिसीज प्रोग्रेशन होता है ह्यूमंस में, तो डिसीज में जो पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तो वैसे ही चेंजेस, वैसे ही जैसे चेंज हो रहा है, तो वैसे ही सिम्टम्स प्रोड्यूस करने वाला कौन सा ड्रग है? ठीक है, प्लांट ओरिजिन का. उसको ही अगर अपन डाइल्यूशन में देंगे, उनको बोलते हैं पोटेंसी. सो इफ देयर इज अ डाइल्यूशंस, okay, 1 to 500, 1 to 1000, so that dilution is known as a potency. Okay, so you might have seen the pills in the homeopathy. So they are the sugar pills on which they have sprayed their drugs. Okay, or their solutions, potency solution. So remember, जर्मनी में होता है होम्योपैथी. साइंटिस्ट कौन है? सैमुअल हायनमैन. एंड लॉ को है कौन सा है? सिमिली सिमिलिबस क्यूरेंतो, मींस लाइक क्योर लाइक. दिस वाज क्वेश्चन इन जीपैट 2020. कैन चेक इट. जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही लेते हैं. सो ये क्वेश्चन जीपैट 2020 में था, ये क्वेश्चन जीपैट 2019 में था. एंड यू general pharmacognosy is very important. You can expect at least three question from general pharmacology only. ठीक है, आउट ऑफ 10 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो आपकी जनरल फार्माकोलॉजी में से आते हैं. ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारा डब्ल्यूएचओ पैरामीटर फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है, लीप कांस्टेंट है, लाइक वॉल्यूम स्पोर मेथड है, उसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है. सो इसके लिए जनरल फार्माकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, जैसे वैसे ही जनरल फार्माकोग्नोसी भी इंपॉर्टेंट है. तो जनरल फार्माकोलॉजी में से भी आपको देखो, आप पेपर में बहुत सारे जनरल फार्माकोलॉजी में से क्वेश्चन आते हैं. टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, ठीक है, एडीएमई के ऊपर, मेटाबॉलिज्म के ऊपर, ठीक है, और ड्रग का लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था. तो मतलब जनरल फार्माकोलॉजी इज इंपॉर्टेंट. सो एज लाइक दैट जनरल फार्माकोग्नोसी इज आल्सो इंपॉर्टेंट. सो नेक्स्ट अपन देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सिस्टम ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज नथिंग बट द Amachi. Amachi is the traditional medicinal system for Tibet. It is a traditional medicine system for Tibet. Now in the southern India मतलब क्या? So you can say part of Tamil Nadu, part of Tamil Nadu, then तमिलनाडु होता है आपका, आंध्र प्रदेश होता है. सो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओके, ओके, तेलंगाना. सो इन दैट area in the southern India, they was having separate traditional system of medicine known as a Siddha, known as a Siddha. Now in this Siddha, so this medicinal system is based upon the use of metals. use of metals, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. use of metals in the Siddha traditional system, it is based upon the use of metals for the treatment, mitigation and diagnosis. Now scientists or related with that is nothing but the sage अगस्त्य. अगस्त्य ऋषि जो है वो
सिद्धा का रिलेटेड है. ओके, सो चाइना में होता है कैंपो मेडिसिनल सिस्टम. आपको एक रिवाइज करता हूँ सिंपली. कैंपो फॉर चाइना, यूनानी फॉर ग्रीस, आयुर्वेदा फॉर इंडिया, होम्योपैथी फॉर जर्मनी, हमाची फॉर टिबेट, एंड सिद्धा फॉर southern India. Okay, now we'll see the next part. So important active constant of plant origin in the medicine. So there are a lot of drugs which are used in the medicine from herbal origin or from plant origin. So for example, you can say this plant active principle and there is just plant and active principle and there is, so just the introduction part. Okay, so in the there is a one drug known as Dioscorea deltoida. Okay, Dioscorea deltoida family, Dioscoreaceae, agave and solanum species. Dioscorea species, agave species, solanum species. Okay, in the Dioscorea, you have steroidal hormones. So in the Dioscorea, steroidal hormones are there. Okay, so all these plants they are used as either anti-inflammatory, anti-arthritics, or they are used for the precursor for hormonal synthesis. Okay, then Papaverum somniferum. So Papaverum somniferum is nothing but the opium alkaloid. Opium is known as a Papaverum somniferum. So opium क्या होता है? Opium is nothing but latex obtained from Papaverum somniferum family Papaveraceae. ठीक है? So Papaverum somniferum is the name of plant. So from that plant you are going to get alkaloids. So alkaloids होते हैं morphine, codeine, papaver, thebaine, etc. So they are used for their analgesic purpose, antiretroviral purpose, and spasmolytic purpose. So use of medicines, use of herbs, it is not a new. So it is very old. Okay, it is very old and ancient from the ancient time. So use of herb as a medicine is practiced. Use of herb as a medicine is practiced. Lot of medicines are there, so they are used in the. पोरांनो लवकर येत जा रे, आपल्याला टायमिंग दिलेला असतो. 11:30 वाजले. तुम्ही एवढं उशीर का करताय? तुमच्या गोष्टी काही गोष्टी तुम्हाला विसरून आणि सिंपल सिंपल क्वेश्चन तुम्हाला मी बोललेला असतो, पण नंतर मैंने आपको बोल दिया होता है सिंपल क्वेश्चन और बाद में आप लेट ज्वाइन होते हो तो बाद में वो आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है, तो वैसे ये पार्ट इजी है तो कोई दिक्कत नहीं. सो पापावरम somniferum, from that morphine, codeine, papaver, thebaine, these kind of alkaloids they are often they are used for analgesic purpose, antiretroviral purpose, and spasmolytic purpose. Okay, so likewise that from cinchona it is known as Jesuit bark. From that anti-malarial drugs was obtained. So cinchona calicea, cinchona ledrigena. ठीक है, so these are the उनका family होता है leguminaceae, cinchona. So from that quinine type of alkaloids was active principle and they were used as a anti-malarial. Quinine is also used as an anti-arrhythmic drug. So lot of medicines, lot of herbal plants are used from which different active principles were isolated and they were used for particular purpose. So likewise that datura, likewise that vinca is there. Vinca, Catharantius roseus family, Apocynaceae. So from that you are going to get some alkaloids like asmalacin, so which is a vasodilator. ये किसके लिए यूज करते हैं? As anti-hypertension. Then from vinca, vincristine, vinblastine, these are two very important alkaloids and they are anti-cancer alkaloids in nature. Okay. So another drug is erythroxylon coca, erythroxylon coca or erythroxylon truxilans. There are different varieties of this coca, erythroxylon coca. So from this you are going to get alkaloids like cocaine. Cocaine is a anesthetic in nature. Cocaine is a anesthetic in nature. So there are a lot of drugs, there are a lot of herbal plants from which different active chemicals they were obtained and they were used for a specific purpose, right? Now again you can see Pilocarpus jabrandi is there one. So you can see Pilocarpus plant. From that plant pilocarpine is the alkaloid obtained which is a cholinomimetic or cholinergic alkaloid. Then from senna, okay, senna, Alexandrian senna or okay, Alexandria senna, Indian senna is there. Okay, Sennae folium. Okay. From that you are going to get sennocytes which are laxative in nature. So एक कुछ प्लांट है जिनकी यूज है. सेना कैसे? सेना is used for the its laxative purpose. Likewise that, so there is a plant known as a datura or the dotra or Hyacinus niger. Then dubo, okay, dubosia.
From that plant, you are going to get propane alkaloids. They are nothing but the hyoscine, hyoscyamine, and atropine. So they are used for their parasympatholitic purpose. वैसे डिजिटलिस लेनोटा एक ड्रग होता है डिजिटलिस लेनोटा सो और डिजिटलिस प्रक्रिया भी होता है फ्रॉम दैट यू आर गोइंग टू गेट digitoxin digoxin and lanotosides all they are nothing but the cardiotonic used in the congestive cardiac failure वैसे इन द सिमिलर वे राउट पिया से भी आपका अल्कलॉइड्स आता है रेजरपिन रेसिनामाइन दे आर यूज्ड फॉर देयर एंटी हाइपरटेंसिव एंड वास्कुलर प्रॉपर्टी so camellia, okay, camellia, or it is known as a thiacynesis. From that you are going to get caffeine, theophylline, okay, theobromine. So these alkaloids they are used as CNS stimulants. From Epetra jetriana, family Epetraceae or Plantagenesis. From that you are going to get ephedrine, which is a sympathomimetic drug. Sepilis ipecacuana और Sepilis acuminata उसमें एक alkaloid आता है imetil. So it is an anti-emetic. Ergot से आता है alkaloids argometrin, argotoxin, argotamine. So all these are nothing but the oxidative in nature and antihypertensive in nature. ठीक है? So podophyllum, there is one plant known as a podophyllum, hexadron, podophyllaceae. So from that podophyllatoxins are the active and they are anti-cancer in nature. So colchicum atomonale is the another drug. So from that colchicine is a alkaloid which is a anti-inflammatory used in the gout. So there are a lot of herbal drugs which are okay. So I have listed a few for the introduction purpose. So important active constituents of the plant origin used in the medicine. इनका use होता है. So it is not only now, it is from ancient time. So oldest literature was the Rigveda. After that Charak Samhita was there. After that Susrut Samhita was there. So they also describe the use of herbal drugs or plant as a medicine. Okay. Okay. Ayurveda is the oldest traditional system of medicine. Ayurveda is the oldest system of traditional medicine, and diagnosis is based upon the three doshas. Okay, three doshas. Okay, Vata, Pitta, and Kapha. Now, Ayurvedic therapy start with the Shodhana. Shodhana means cleansing. Then Shamna. Shamna means palliative treatment. Okay, and then Rasayana. Rasayana means rejuvenation therapy. Now, classification of products. There are different way to classify the products. Okay. So, first one is a taxonomical classification. Taxonomical classification. So in that depend it is a botanical classification. Botanical classification होता है तो पहले सबसे पहले क्या था फाइलम आएगा उसके बाद में ऑर्डर क्या है उस प्लांट का उसके बाद में उसका फैमिली कौन सा है उसके बाद में जीनस कौन सा है उसके बाद में स्पीशीज कौन सा है taxonomical classification means it is a botanical classification so phylum then class then order second one is please mute yourself second one is the morphological classification so morphological classification means आपको जो दिखता है वो okay? So depending on the morphological classification drug may be classified either fruits, leaves, stems, roots, okay, tubers, okay, okay, tubers, etc. etc. So depending on the part of plant used. So morphological classification depending on the part of plant used. Then chemical classification is also there. So depending upon the chemical present in the plant. So it may be either alkaloidal drug, it may be either glycosidal drug, terpenoids, tannins, volatile oils, carbohydrate containing drug. So जिसमें वो केमिकल कांस्टेंट जो है उसकी बेसिकली क्लासिफिकेशन देन थेरापेटिक क्लासिफिकेशन सो डिपेंडिंग ऑन अपॉन द यूज है ना जैसे एंटी कैंसर ड्रग्स उसमें पोडोफॉलम आएगा आपका है उसमें कैथरांटेसोलजिस आएगा पिंक आएगा ऑर्बिटल्स आएंगे है ना सो जैसे लेक्सिडिव में आएगा सेन्ना एलो ठीक है लाइक दैट कैस्केरा so astringent में आएंगे tannins वगैरह वगैरह so depending on the therapeutic also they are classified now chemotaxonomical classification chemotaxonomical classification is the combination of chemical classification as well as taxonomical classification जो जीनस है स्पेसीज है और उसमें पर्टिकुलर केमिकल है तो उसको chemotaxonomical classification में डालता है for example propane alkaloids so it is also present in the your belladonna also present in the your datura also present in the hyoscyamus which occurs in the Solanaceae family so all belongs to Solanaceae family chemotaxonomy chemo is for the chemical and taxonomy is for its
its family. So in the chemotaxonomical classification, so chemical substance plus family, they are combined. Okay, so like in the Solanaceae family, propane alkyls are mostly there, so it comes under chemotaxonomical classification. एक आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है इसलिए ये लिया है, otherwise it is not much important, but there might be a question. So different classes of products. So products can be classified depending upon the taxonomical classification. So in which phylum, order, family, genus, species. Okay. Morphological classification depending upon the part of that herb used. कि वो हर्ब जो है उसका पार्ट कौन सा यूज करते हैं, जैसे अपन सिंकोना का क्या यूज करते हैं, सिंकोना का बार्क यूज करते हैं, ठीक है। कोरिएंडर का क्या यूज करते हैं, फ्रूट यूज करते हैं, ठीक है। कोरिएंडर का लीफ यूज करते हैं, लाइकवाइज दैट, ठीक है। पोडोफाइलम का आपको राइजम यूज करना है, जिंजर राइजम यूज करते हैं, क्लोव का क्लोव बड यूज करते हैं, है ना। सो लाइकवाइज दैट मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन मींस डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल प्रेजेंट इन दैट, अल्कोलॉइड हो सकता है, उसमें ग्लाइकोसाइड हो सकता है, उसमें टैनिन हो सकता है, टर्पेनॉइड हो सकता है ना, लाइकवाइज दैट। केमोटैक्सोनॉमिकल जैसे बोला मैं, फैमिली प्लस एक्ट कॉन्स्टेंट। सीरो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट आता है सीरो टैक्सोनॉमिकल। सीरो इज द टर्म फॉर serum. See, in the serum there is antibodies. Okay. So relation of herb and production of antibodies. So based upon that, serotaxonomical classification is. Are you getting? समझ रहा है आपको? Classification of crude drugs. Yes or no? Important है, आपको याद रखना है। तो आपको क्वेश्चन आएगा वन ऑफ द फॉलोइंग वे। सो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि crude drugs are not classified based upon the following. Okay, या फिर crude drugs are classified based upon the following except, ऐसा भी क्वेश्चन आता है आपको, एक दो बार आई थिंक आ चुका है एक बार। we are going to see that we are not going to see the details of your botany of these, but important parts I will discuss. इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आएगा, सेल इंक्लूजन्स। सेल इंक्लूजन्स, सेल के अंदर जो है उसको क्या बोलेंगे। सो सेल इंक्लूजन्स दे आर नोन एज एग्रेस्टिक सब्सटेंसेस ऑफ प्लांट। सेल के अंदर जो होता है सैपोड, ठीक है, सेल के अंदर जो वॉक्यूल्स होते हैं, सेल के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं एग्रेस्टिक सब्सटेंसेस ऑफ प्लांट। इसके ऊपर नाइपर में क्वेश्चन आ चुके हैं, सेल इंक्लूजन्स। ओके, सो इन दैट रिजर्व फूड, सेल के अंदर क्या क्या होता है, रिजर्व फूड। सेल inclusions they are known as egrastic substances of the plant. So in that reserve food, then excretory foods are there, some secretory foods are there. Okay, so these are known as egrastic substances of plant. reserve food कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट there in case of जैसे सेलुलोज होता है, सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट। then inulin, inulin is a polymer of fructose, starch, cellulose, protein and some liquid. Okay, so that is known as a reserve food of plant. Then excretory products. Plant also present the excretory product. So like alkaloids, glycoside, tannins, resin, latex, volatile oil, some crystals. So alkaloids, they are the excretory product. They are not required for plant. So they are the excretory product, and they have the different function like production, protection function. So जैसे होता है alkaloids, some alkaloids are poisonous in nature. तो अगर कोई herbivorous इंसेक्ट है, सो अगर वो प्लांट खाता है तो उसके alkaloids की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। इट इज अ प्रोडक्टिव इन नेचर। ओके, अगेन इट इज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। So likewise that glycoside, tannins, resins, latex and volatile oil, mineral crystal, they are the excretory product of the plant. Then secretory product of the plant, in that enzymes and different pigments they are secreted by plant. Okay, so they all are known as egrastic substances of the plant. Egrastic substance of plant or cell inclusions. So reserve food, excretory product, secretory products, and okay, now there are two type of drug. Crude drugs can be classified into two type. Another, so organized drug means what? Organized drugs means what? So it consists of parts of this part of the herb. Herb जो है आपका उसका कुछ part है. So it is a part of herb. Organized means organ. You can say this is term known as organ. So organ means it is a organ of plant. So organized drug कौन से होंगे? Leaves, okay, stem, fruit, bark, roots, rhizome, ठीक है, या फिर flowers, clover, birds, ठीक है। So all this, if there is a if part of
that herb or part of that plant is used as a whole known as a organized drug. तो उसका पार्ट ले रहे हैं अपन, बार्क ले रहे हैं, बार्क मतलब क्या है, आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट ऑन द वुड. लीव्स ले रहे हैं मतलब दैट इज अ पार्ट, स्टीम ले रहे हैं पार्ट है उसका, फ्रूट्स ले रहे हैं पार्ट है उसका, बार्क, फ्रूट्स, रूट्स, राइजोम्स, स्टूलन्स. सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग. ठीक है, क्वेश्चन आता है आपको, फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग. ठीक है, आपको ये देंगे जैसे फॉर एग्जांपल लीव किसका यूज करते हैं अपन, फॉर एग्जांपल यू आर यूजिंग लीव्स ऑफ योर, ठीक है, बेलेडोना लीव्स होता है. ओके, उसके बाद में आपका डिजिटलिस का लीव्स होता है, उसके बाद में आपका है ना, उसके बाद में आपका बहुत सारे लीव्स होता है जैसे, है ना. सो लीव्स आएगा उसमें. स्टेम किसका यूज करते हैं, फ्रूट किसका यूज करते हैं, कोरिएंडर, कोरिएंडर, कोरिएंडर का अपन फ्रूट यूज करते हैं, आप कार्डियमम का फ्रूट यूज करते हो, बट है ना. बार्क किसका यूज करते हैं, अर्जुना बार्क इज देयर. ओके, सिनेमन बार्क इज देयर, राइट. रूट्स से यूज करेंगे पोडोफाइलम, रूट्स एंड राइजोम, राइजोम से यूज करेंगे जिंजर है आपका, जिंजर है, उसके बाद में आपका टर्मरिक है. सो दीज आर द ऑर्गेनाइज्ड ड्रग. ऑर्गेनाइज्ड ड्रग आपको ऑप्शन में देंगे फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, और आपको वो ऑप्शन में देंगे जिंजर, उसके बाद में आपको देंगे कोरिएंडर, उसके बाद में देंगे आपका सेन्ना, उसके बाद में देंगे लास्ट ऑप्शन में देंगे आपका लास्ट ऑप्शन में देंगे आपको हनी. हनी इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड ड्रग. अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कौन से होते हैं, so latex produced by plant, juice produced by plant, juice extract, resins, volatile oils, mixed oils, gums. Gum, gum is not a organ of plant. गम क्या होता है, गम इज अ पैथोलॉजिकल प्रोडक्ट. जब आप प्लांट को इंजुरी करेंगे तो उसमें से गमी सिक्रेशन बाहर आता है, उससे गम बनता है. सो गम इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, सो इट इज अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग. सो अनऑर्गेनाइज्ड कौन सा है, लेटेक्स, जैसे रबर, रबर आता है आपका, जूस, एक्सट्रैक्ट, रेजिन्स, वोलेटाइल ऑयल, फिक्स्ड ऑयल. वोलेटाइल ऑयल कहाँ से मिलता है, आप जो भी प्लांट है उसके फ्रूट से या फिर जो भी प्लांट के स्टेम से, उससे कुछ कुछ प्लांट में लीफ में भी होता है. फॉर एग्जांपल मेंथा, मेंथा आपका लीव्स में भी ऑयल होता है. फिक्स्ड ऑयल मोस्टली फ्रूट में होता है. सो यू आर एक्सट्रैक्टिंग these oils, so they are not organized organs of the plant, so they are the product produced by the plant. So that's why अगर ऑर्गन है तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, अगर ऑर्गन नहीं है तो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग. Now example, pharmacological category or classification of drug according to the pharmacological actions. Right? So there are a lot of classes, but for your understanding purpose, there are listed few. So for example, drug acting on GIT. तो इसमें बहुत सारी कैटेगरी है, बिटर ड्रग, कार्मिनेटिव, इमेटिक, एंटी अमीबिक, लैक्सेटिव, पर्गेटिव, कैथेटिक. So bitter, for example, cinchona, quassia, gentian. Carminative drugs are like your phenyl, cardamom, mentha. Emetic drugs ipecacuanha or ipec. Anti-amoebic known as a kurchi bark or ipec again. Laxative कौन होता है, इसबगोल, agar, banana is also laxative. अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो क्या करना है, आपको जो रायपन बनाना है, पिकलेली केळी 2-4 केळी खायची संध्याकाळी, सकाळी ओके. Then purgative, senna is there, purgative, castor oil, cathartic, senna is there again. So drug acting on the respiratory system. So expectorant like Vasaka plant, Vasaka Adatoda Vasika. Licorice is expectorant, इपेक्युना. Antidepressive opium, उसमें से कोडीन जो आता है वो एंटीडेप्रेसिव. Bronchodilator, इपेड्रा, thiazide. Drug acting on cardiovascular system, cardiotonic कौन है? You know that list of the speed. Cardiac depression कौन है? Cinchona, Venetrum. Vasoconstrictor, ergot. Anti-hypertensive, antipsychotic कौन है? Aulfia. Drug acting on autonomic nervous system like adrenergic कौन है? Ipeta. Cholinergic कौन है? Physostigma, pilocarpus. Anticholinergic कौन है? Datura and belladonna. उसमें से atropine वगैरह है. So chemical, okay. So pharmacological classification. Example दिए है उसका. Again you can see antispasmodic कौन है? Datura, hyoscyamus niger, opium, QA, they are the antispasmodic. Antispasmodic, spasmodic मतलब to relieve the unwanted contraction of your smooth muscle. As analgesic कौन है? Morphine analgesic. Depressant, belladonna, hyoscyamus niger, opium. Then antispasmodic, datura, hyoscyamus, opium, curare.
एंटी कैंसर ड्रग कौन से, विंका, अल्कोलाइड्स है, पोडोफाइलम है, टैक्सस है ना। एंटी रूमेटिक रूमेटॉइड में कौन से यूज करते हैं, अकोनिटम, नेपेलस, कोलचिकम, गोबुल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंथलमेंटिक कौन है, कोशिया, वेडन। एस्ट्रिंजेंट कौन है, कैडेचो, मारियोबाइलॉन। एंटी मलेरिया कौन है, सिंकोना, आर्टेमिसिया। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी, इम्यून सिस्टम चेंज करेंगे कौन, जिनसेंग। जिनसेंग के ऊपर एक बार क्वेश्चन आ चुका है एज अ एंटी डीएनए एक्टिविटी। सो ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर जो होता है, सो जिनसेंग और जिनसेनोलाइड्स दे आर एंटी ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। सो इट इज immunomodulatory, so it will increase the immunity. Ashwagandha is there, tulsi is there. Immunizing agents, vaccine, sera, and antitoxin. Drug acting on a skin membrane. So beeswax, wool pato करे, balsam of tolu, balsam of Peru. Chemotherapeutic agent, antibiotic of plant origins are also there. Some antibiotics are. Local anesthetic drug like cocaine जो होता है, that is local anesthetic. So pharmacological classification of crude drugs. Chemical classification of crude drugs. ठीक है, next आता है आपका chemical classification of crude drugs. Am I audible? Audible आएगा clearly? So, some plants they are having alkaloids, जैसे सिंकोना, धतूरा, okay, then विंका, इपिकेकुना, नक्सोमिका, इसमें क्या है, alkaloids है। सिंकोना में क्विनोलिन टाइप ऑफ alkaloids है। धतूरा में क्या है, धतूरा में आपका प्रोपेन टाइप ऑफ alkaloids। विंका में क्या है, इंडोल टाइप ऑफ alkaloids है ना। इपिकेकुना में क्या है, सो इपिकेकुना में भी alkaloids है, ये टाइप याद नहीं आ रहा है। नक्सोमिका उसमें क्या है, इंडोल टाइप ऑफ alkaloids, राइट। So glycosides, so senna, aloe, ginseng, glycyrrhiza, distillers, so they are having alkaloid glycosides. senna में क्या है कि anthraquinone glycosides है, aloe में भी same, distillers में क्या है, cardiac glycosides है, glycyrrhiza में saponin type of glycosides है, right? So carbohydrate and derived product है ना, chemical group कौन से एग्जांपल, acacia, trichan, starch, ये सब कुल इसमें सब क्या है, alkaloids रहेंगे, सॉरी इसमें सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट रहेंगे। So volatile oils का example, for example clove oil, coriander oil, phenol, cinnamon, cumin. Lot of examples are there. Here are only few mentioned. Okay. Resins and resin combination. Benzoin, balsam of Tolu, balsam of Peru. Tannins में रहेंगे कैटेचू, टी, पेल्टेडू, थियासाइनेसिस हो गए। Tannins enzymes में पेपिन, पम्पाया, केसिन, ट्रिप्सिन, पम्पाया again. These are the plant having chemical classification. So lipids में बहुत सारे बीज वैक्स, कोकम बटर, लैनोलिन, फिक्स्ड ऑयल भी आता है, वोलेटाइल ऑयल आता है, बहुत सारे हैं। Now plant tissue, there are different kind of tissues in the plant. I am not going to explain you the botany, but आपको ये मालूम होना चाहिए, plant tissues are classified into two type. First in known as a merismatic tissue. Merismatic tissue question आ चुका है, okay. So merismatic tissue is nothing but the tissue having capacity to redivide. Merismatic tissue किसको बोलते हैं, tissue which has a capacity to redivide. So plant cell which can produce a whole plant. It is known as a totipotency. So the totipotency, the cells or tissue having totipotency in nature, which can raise the whole plant, known as a merismatic tissue. So they have capacity to redivide. In that you have three types: apical meristem, lateral meristem, and intercalary meristem. बस आपको यह याद रखना है. Then permanent tissue, they don't have capacity to redivide. इसमें भी दो टाइप का है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल में आता है आपका स्क्लेरेंकाइमा, पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा। पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा दे आर सिंपल परमानेंट टिश्यू, क्योंकि इसके ऊपर क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है। ओके, सो स्क्लेरेंकाइमा इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, स्क्लेराइड्स एंड फाइबर्स। देन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना है। व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू? So in that xylem and phloem they are the complex permanent tissue. Xylem में आता है tracheids, vessels, xylem parenchyma, xylem parenchyma and xylem fibers. Xylem parenchyma, xylem collenchyma and fibers. Phloem में आता है sieve tubes, companion cells, okay. Then phloem parenchyma and phloem fibers. So ये are nothing but they all are nothing but the complex permanent tissue. Xylem phloem क्या है, complex permanent tissue है, ठीक है, याद रखना। सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन है, पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। ये तीन क्या है आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू। परमानेंट मतलब क्या, दे आर नॉट हैविंग कैपेसिटी टू रीडिवाइड, ये डिवाइड नहीं होते, ठीक है।
एक बार बन गए तो वैसे रहेंगे। कॉम्प्लेक्स में आएगा फ्लोएम एंड जाइलेम। हर एक का फंक्शन अलग है, हर एक का फंक्शंस क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, क्लेंकाइमा, स्ट्रक्चर ऑफ पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेंकाइमा, टाइप्स ऑफ कोलेंकाइमा, पेरेंकाइमा, स्क्लेंकाइमा, जाइलम वेसल के टाइप्स होते हैं, फ्लोएम के भी वो थे, सो एपिडर्मिस का भी टाइप होता है, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट बिकॉज दैट इज नॉट मच इम्पोर्टेंट फॉर यू. But you should know this classification. What is meant by merismatic tissue? It can divide and redivide. It has a totipotency property, right? Permanent tissue मतलब क्या? They will not divide and redivide. उसमें दो टाइप का होता है, सिंपल होता है एंड कॉम्प्लेक्स होता है. सिंपल में ये तीन आएगा, कायमा वाले, है ना, पेरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा एंड कोलेंकाइमा. ये क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू. कॉम्प्लेक्स वाले कौन है? जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम एंड फ्लोएम दे आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. जाइलम में भी इतनी टाइप है. Tracheids, vessels, xylem parenchyma, xylem collenchyma, then xylem fibers. Sieve tubes, companion cell, phloem parenchyma and phloem fibers. They are the phloem. ये आपको मालूम होना चाहिए. नेक्स्ट विल सी मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, डिफरेंस क्या है? सो मेरिस्मेटिक टिश्यू comprises of a young cell which have power to redivide and multiply. Permanent tissue, these cells are living or non-living and they do not, okay, having attained their definite form and size. इनको नहीं होता है डिवाइडेशन. Now these merismatic cell, these cells are present in the growing points. Merismatic tissue का आप होता है growing point, like tips of root, shoot and epidermis. तो आपने देखा होगा प्लांट को, देखो एक लीफ के नीचे एक छोटा सा एक लीफ का पॉइंट आता है, that is known as apical meristem. So which is the merismatic tissue. रूट में क्या होता है? छोटा सा एक बारीक सा एक हेयर देखा, तो दैट इज अ मेरिस्मेटिक टिश्यू. और आपके बायोटेक्नोलॉजी में क्या है? कल्चर होता है, मेरिस्मेटिक कल्चर. सो दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वायरस फ्री प्लांट. तो आप वो बाद में देखेंगे. सो इट इज नथिंग बट द अपाइकल मेरिस्टेम, उसमें वही सैंपल लेते हैं. बट इन केस ऑफ परमानेंट टिश्यू यूजुअली प्रेजेंट इन द ग्राउंड टिश्यू एंड मेक द फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम ऑफ प्लांट. मेरिस्मेटिक सेल्स आर क्लोजली पैक्ड विदाउट इंट्रासेलुलर स्पेसेस. लेकिन परमानेंट टिश्यू में क्या है? इंट्रासेलुलर स्पेस होता है. एपिडर्मिस, डर्मिस, ये सब पार्ट होता है टाइप. डिफरेंट टाइप ऑफ सेल वॉल ऑफ एपिडर्मिस. डिफरेंट स्ट्रेटेड वॉल मतलब क्या? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा, स्ट्रेटेड वॉल. वेवी वॉल का ऐसा स्ट्रक्चर दिखा, वेवी वॉल. स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेटली वेवी वॉल, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा. ब्लेडेड वॉल, ऐसा स्ट्रक्चर दिखा. ये टर्म्स आपको आने वाले हैं क्योंकि so while studying the leaves you are going to have epidermis. So stratified epidermis मतलब ये इस तरीके की heavy walled epidermis मतलब उस तरीके. It is not important for GPAT, ये भी important नहीं है. So in the pharmacy exam they used to ask the difference in the leaf and leaflet. ये leaf मतलब क्या, leaflet मतलब क्या, difference क्या है leaf and leaflet. So I would like to know difference between leaf and leaflets. Bud or branch is present in the axil, bud is absent in the leaflet. लीफ मतलब क्या? एक पूरा एक ही लीफ रहेगा. लीफलेट मतलब क्या? दे आर प्रेजेंट इन द पेयर्स. लीफ मतलब क्या? अकेला ही रहेगा. लीफलेट मतलब क्या? दे आर प्रेजेंट इन द पेयर्स. देखो आपने अगर नीम का पत्ता देखा होगा, नीम का पत्ता, सो इन द नीम इट इज अ लीफलेट्स. नीम में लीफलेट होता है. जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है? इट इज अ लीफलेट ऑफ योर ड्रमस्टिक, बोरिंगा ओलिफेरा. जैसे आपका होता है ना मोरिंगा के, और मोरिंगा ओलिफेरा, उसमें लीफलेट्स पर, उसमें ऐसे पेयर्स में आएंगे. तो एक पेयर में भी क्या है? लीफलेट, इधर लीव्स आएंगे. सो लीफ कैसा है? सिंगल है, एक ही पत्ता है तो उसको लीफ बोलेंगे. पत्ते अगर पेयर में है तो उसको लीफलेट बोलेंगे. सो बड और ब्रांच इज प्रेजेंट इन द एक्सिल. यहाँ पे एक्सिल के ऊपर यहाँ पे ऐसा उसका पत्ता यहाँ से निकलेगा. बड इज एब्सेंट इन द लीफलेट्स. लीव्स आर solitary and rarely arranged and are arranged spirally. These are these leaflets are arranged in the pairs. These lie in the different planes. Leaflets lie in the same plane. लीव्स देखो आप, अगर प्लांट के ऊपर लीफ है तो वो अलग अलग प्लेन में होते हैं, एक सामने, एक पीछे, एक नीचे, एक ऊपर, ऐसा. बट लीफलेट्स क्या होते हैं? दे आर अरेंज्ड इन द सेम प्लेन. सिमेट्री होता है किसमें? सिमेट्रिकल एट द बेस. जो लीफ होता है दैट इज सिमेट्रिकल एट द बेस. जो लीफ है ना, ये देखो यहाँ पे, इट इज सिमेट्रिकल एट बेस.
But leaflets, they are not a symmetrical at the base. ये देखो यहाँ पे leaflet है, ये अलग है, ये अलग है. Leaflets are not a symmetrical at the base. Okay. So leaves का example belladonna, वसाका, eucalyptus leaves. They consist of a leaf. Leaflet किसमें होते हैं? रोज. रोज आपका जो गुलाब होता है उसमें भी दो दो लीफलेट होते हैं. गुलाब के पालने में भी क्या है? लीफलेट्स होते हैं. सेना में भी लीफलेट होते हैं. कैसिया में लीफलेट होते हैं. नीम नीम जो होता है नीम, इसमें भी क्या है? लीफलेट्स होते हैं. और प्लांट टिश्यू और अप टू टाइप मेरिस्मेटिक टिश्यू, दे आर हैविंग कैपेसिटी टू डिवाइड और मल्टीप्लाई टिश्यू. ओके, मेरिस्मेटिक टिश्यू बोलते हैं. सो दोज टिश्यू व्हिच आर हैविंग कैपेसिटी टू डिवाइड, एंड दे आर टोटली पोलेंट, known as a merismatic tissue. And second होता है permanent tissue. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि which tissue will have property to divide and redivide. So merismatic type of tissue will have property to divide and redivide. then होता है permanent tissue. Permanent tissue में दो टाइप होता है. Simple permanent tissue, so like epidermis, parenchyma, sclerenchyma, collenchyma and cork. Then complex permanent tissue, xylem, phloem and secretory structure. Some plants will secrete a milk-like secretions through a particular tissue known as a lactiferous tissue. Lax, okay, lactiferous tissue known as a milk tubes. And they will secrete a they will secrete a milk-like secretion. Okay. Lactiferous tissue, they will secrete a milk-like secretion known as a milk tubes. Milk tubes. तो माइक्रोस्कोपी ऑफ लीफ में और कुछ पढ़ना है आपको तो पढ़ सकते हो उसमें. जैसे ये होता है लैमिना कैसा है, मार्जिन कैसी है, मिड्रिप कैसी है. बट दैट इज नॉट अ इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर योर जीपैट, दैट्स व्हाई आई एम नॉट कीप दैट. बट लीफ कांस्टेंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर योर जीपैट, सो यू शुड नो what do you mean by stomata. What do you mean by stomata? So stomata is nothing but they are the a tiny openings. Stomata क्या होता है? एक minute opening होता है that is found in the epidermis, either lower epidermis or either upper epidermis or both epidermis. Okay. So depending on that, leaves are classified. ठीक है. Stomata is nothing but it is an organ for respiration. Question already आ चुका है. Organ for respiration in the plant. Stomata. They are the minor opening present in the leaves, or they might be present in the stem and fruit also. So minor opening found in the epidermis. These openings are surrounded by kidney-shaped guard cells. And types of stomata depends on the arrangement of guard cell and secretory cell. कि stomata है क्या है? एक opening है plant में, क्या है? Organ of respiration. Okay. So plant breathe or take respiration through a stomata. So organ for respiration is a stomata in the plant. Stomata is nothing but the minute opening found in the epidermis of the leaves or stem, or it may be found in the fruits. Stomata, they are the organ for respiration. Plant takes breathing through the stomata. Stomata are surrounded by kidney-shaped guard cells, and the arrangement of these guard cells and stomatal opening based upon the arrangement of guard cell and stomatal opening, they are classified into different types. How I will explain it. Okay. Now, stomata, they are either present in the epidermis, upper epidermis, or lower epidermis, or both. So based on that, the leaves are classified. So dorsiventral leaf, first is known as dorsiventral leaf. The dorsiventral leaf किसको बोलेंगे? So if the stomata are present on the if stomata are present in the lower epidermis only, only the dorsiventral leaf. Okay. And if stomata are present in the upper epidermis as well as lower epidermis, दोनों भी epidermis के ऊपर stomata है तो उसको बोलेंगे isobilateral leaves. If stomata are present only in the lower epidermis, so known as a dorsiventral leaf. क्वेश्चन आता है इसके ऊपर. डोर्सिवेंट्रल लीफ क्या होता है, आइसोबाइलेटरल लीफ क्या होता है, आपको भी कॉलेज में भी बोला नहीं होगा. Dorsiventral leaf means, so stomata, they are present in the lower epidermis abundantly, then it is known as a dorsiventral leaf. And if stomata are present in the both upper as well as lower epidermis, known as isobilateral leaves. If there is no stomata on the leaves, it is known as a submerged leaves. Are you getting or not? समझ रहा है कि नहीं? Yes. Okay. So stomata अगर lower epidermis में है, ठीक है, leaves होता है उसका upper epidermis and lower epidermis, ठीक है.
जो स्मूथ पार्ट होता है उसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। जो ठीक है, आप कौन सा भी एक पत्ता ले लो, पत्ते में ऊपर एक स्मूथ लेयर होता है, एक शाइनी लेयर होता है, उसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। और पीछे वाला जो लेयर होता है उसको बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, इफ स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन द लोअर एपिडर्मिस नोन एज डोर्सोवेंट्रल लिप, if it is present in the both epidermis known as isobilateral leaf, if stomata is absent in the leaves known as the submerged leaves. Stomata is nothing but the organ for respiration in the plant and also organ for excretion of waste product, carbon dioxide, waste of carbon dioxide. Trichomes means they are known as the plant hairs. Trichomes are known as the plant hairs. There are different type of trichomes, covering trichome, glandular trichomes, ठीक है, स्पेशल टाइप ट्राइकोम्स विल सी इट। ओके, बट यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन है। स्टोमेटा मतलब क्या है, उसका रोल क्या है। सो यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, स्टोमेटा इज द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन फॉर द प्लांट। ठीक है, डोर्सोवेंट्रल लीव्स मतलब क्या है, इफ स्टोमेटा आर ओनली प्रेजेंट इन द लोअर एपिडर्मिस known as dorsolateral leaf, stomata is present in the upper as well as lower known as isobilateral leaf। तो ये जीपैट के लिए इंपॉर्टेंट है, नाइपर के लिए भी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, टाइप ऑफ स्टोमेटा। ओके, सो स्टोमेटा मीन्स व्हाट, स्टोमेटा मीन्स इट इज नोन एज ओपनिंग। यहाँ पे देखो व्हाइट कलर का जो ओपनिंग दे रहा है, तो दैट इज नोन एज स्टोमेटल ओपनिंग। क्या है, इसको बोलेंगे स्टोमेटल ओपनिंग। एंड दिस स्टोमेटल ओपनिंग इज सराउंडेड बाय ए गार्ड सेल्स। स्टोमेटल ओपनिंग में वो गार्ड सेल से सराउंडेड होता है। गार्ड सेल क्या है, किडनी शेप्ड सेल्स। यहाँ पे देखो किडनी शेप्ड सेल्स है, ये क्या है, यहाँ पे एक, यहाँ पे यहाँ पे two kidney shaped cells, they surround the stomatal opening known as the guard cells। इसको guard cell बोलते हैं, green वाले। and guard cells are surrounded with the another epidermal cell known as the subsidiary cells। अभी ये ब्लू वाले जो है subsidiary cells है, ये ग्रीन वाले गार्ड सेल्स है, और जो व्हाइट वाला पोर्शन है उसको बोलेंगे स्टोमेटल ओपनिंग। ओके, नाउ डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट ऑफ दिस, इसका अरेंजमेंट कैसे है। सो अरेंजमेंट, ये स्टोमेटल ओपनिंग है। So if guard cells are and stomatal opening, guard cells and stomatal opening, if they are, their arrangement is a parallel, तो guard cell stomatal opening के parallel है, उसको बोलेंगे parasitic stomata। If opening of stomatal opening is parallel to the guard cells, that is known as a parasitic stomata। Okay, found in the found in the coca। Okay, तो उसका एग्जांपल बाद में देखेंगे। Now if the stomatal, okay, if guard cells are arranged, if guard cells and guard cells are arranged, okay, subsidiary cells and guard cells if they are arranged perpendicular to the stomata, stomatal opening, ठीक है, perpendicular है guard cells, ठीक है, अगर guard cells and subsidiary cells they are parallel to the stomatal opening, the axis of that, if it is parallel to the stomatal opening known as a parasitic, if axis of guard cells and subsidiary cells, if it is a perpendicular to the stomatal opening known as a, okay, diastatic stomata or cross cell stomata। diastatic stomata is also known as a cross cell stomata। क्यों, क्योंकि यहाँ पे axis of these cells it is a perpendicular। देखो यहाँ पे these guard cells, these subsidiary cells they are perpendicular to the stomatal opening। है subsidiary cell को, इसको ब्लू को subsidiary cell बोलते हैं। ब्लू वाले क्या है subsidiary, ये ग्रीन वाले क्या है guard cells। so arrangement of subsidiary cells and guard cells toward the stomatal opening। यहाँ पे देखो subsidiary cells they are parallel to the stomatal opening। so axis of subsidiary cell is parallel to the stomatal opening, that's why it is known as parasitic stomata। Okay, parasitic stomata। if it is a perpendicular to the stomatal opening known as diastatic stomata or cross cell stomata। are you getting or not, समझ रहा है आपको। okay, so if subsidiary cells guard cells they are arranged up parallelly with the stomatal opening known as a parasitic stomata। okay, if subsidiary cell and guard cell arrangement is a perpendicular to the stomatal opening, यहाँ पे देखो perpendicular known as a diastatic stomata or cross cell stomata। what is meant by anemocytic stomata, anisocytic stomata। so next is anisocytic stomata। so in this also stomatal opening is covered by two guard cells and three subsidiary cells। subsidiary cell कितने होंगे, यहाँ पे तीन होंगे, ये एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया।
So stomata is surrounded by two guard cells in every type of stomata, and arrangement of subsidiary cell is different. So if there are stomatal opening is surrounded by three subsidiary cells, out of which one is small. तो ये वाला क्या है, ये छोटा है. So stomata is surrounded by three subsidiary cell, out of one which is a small. ये क्या है, एक क्या है, small होता है. So known as anisocytic stomata. Anisocytic stomata. So mostly found in the solanaceae plant. Next होता है आपका anemocytic stomata. Anemocytic stomata. So stomata is surrounded by a varying number of subsidiary cell. Varying number of subsidiary cell. बहुत सारे subsidiary cells है. Stomata is surrounded by varying number of subsidiary cells. Subsidiary cells. Okay. Out of which one is a small related to other, known as anemocytic stomata. And एक होता है actinocytic stomata. Actinocytic stomata मतलब क्या? They are known as a radiate celled stomata. इसको radiate cell बोलते हैं. Why? Because stomata is surrounded by radiating subsidiary cells. तो यहाँ पे उनका radiate मतलब यहाँ पे radiating subsidiary cells. That's why it is known as a radiate celled stomata. Okay? So these are the type of stomata. अभी ये आपको explain आपके समझने के लिए. Okay? So I would like to explain एक बार फिर से देख लो. So what is meant by stomata? Stomata means nothing but that it is a minute opening on the plant surface on the epidermis. It is an organ for respiration. Every stomata, every stomatal opening is surrounded by guard cell, kidney-shaped cells known as guard cell. ये एक होता है, ये एक होता है. Now, guard cells are surrounded by subsidiary cells. इसको बोलेंगे subsidiary cells. ये जो blue वाले. Now, arrangement of subsidiary cells and guard cells along with the axis of stomatal opening that will decide the type of stomata. If subsidiary cells they are arranged up parallelly with the guard cell or stomatal opening, you can say it is a parasitic stomata. Subsidiary cells they are arranged up perpendicular to the stomatal opening. It is known as dissetic stomata or cross-celled stomata. If stomata are surrounding by three guard cells, sorry, if stomata is surrounded by three subsidiary cells, out of one which is small than others, known as a anisocytic stomata. If stomatal opening is surrounded by varying number of subsidiary cells, out of which one is a small, known as a anemocytic stomata. If stomata is surrounded by radiating subsidiary cells, known as a radiate cell stomata or actinocytic stomata. ये टाइप होते हैं इसमें. ठीक है. Now this chart is important for your GPAT and Niper exam. Now type of stomata with examples. Type of stomata and their synonym, their features and example of drug. ठीक है. Now पहला होता है डायसेटिक स्टोमेटा. डायसेटिक स्टोमेटा. ठीक है. पहला अपन ये लेंगे पैरासिटिक. Sequentially जाए. First is nothing but the parasitic stomata. So parasitic stomata they are also known as a parallel celled stomata. उनका synonym बहुत important. Also known as a rubeaceous stomata. Parasitic stomata में क्या होता है कि stomatal opening and guard cell they are parallel with the subsidiary cell. That's why they are known as a parasitic stomata. Okay. Parasitic stomata also known as a parallel cell stomata or rubeaceous cell stomata because mostly they are found in the rubeaceous family. Rubeaceae family जो होते हैं उसमें ये parasitic type of stomata आते हैं. उसके लिए उसको क्या बोलते हैं? Rubeaceous stomata. Parasitic stomata or parallel cell stomata or rubeaceous stomata. So what happens? Guard cells are surrounded by two subsidiary cells. Okay, guard cells are surrounded by two subsidiary cells. आपने देखा है. Guard cells, ये जो है guard cells, they are surrounded by blue वाले subsidiary cells. Axis of which is a parallel to the stoma. Axis of which is a parallel to the stomatal opening. That's why they are known as a parasitic stomata or rubeaceous stomata or parallel cells. समझ में आया ये? सगळ्यांना सबको समझ में आया क्या? आप बोलो यार प्रॉपरली. यस. पैरासिटिक स्टोमेटा. ओके. सो एग्जांपल क्या है उसका? सेन्ना कोका एंड रुबेशियस प्लांट.
जितने भी रुबियासी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उसमें ये क्या है, पैरासिटिक स्टोमेटा। फॉर एग्जांपल सेन्ना एंड कोका। नाइपर में क्वेश्चन आते जाता है इसके ऊपर, नाइपर में जीपैट में क्वेश्चन आता है। So parasitic stomata or parallel cell stomata or rubeaceous stomata. So two guard cells are there surrounded by two subsidiary cells and axis of which is a parallel to the opening of stomata, known as a parasitic stomata. Now दूसरा होता है diastatic stomata. Diastatic stomata or they are also known as a caryophyllaceous stomata or also called as a cross cell stomata or also called as a labiate cell stomata. Labiate क्यों बोलते हैं? So this diastatic stomata or cross cell stomata they are found in the labiati family. Labiati family में ये mostly पाया जाता है, तो that's why उनको बोलते हैं labiate cell stomata or diastatic stomata or caryophyllaceous stomata or cross cell stomata. ठीक है? Now in this guard cells are surrounded by two subsidiary cells and axis of which is perpendicular to the opening of stomata, known as a diastatic stomata or cross cell stomata or caryophyllaceous stomata or labiate stomata. तो एग्जांपल्स ऑफ ड्रग किसमें होते हैं? वसका, तुलसी, स्परमिंट, पेपरमिंट एंड दे आर फाउंड इन द लेबेटी फैमिली. लेबेट सेल स्टोमेटा और डायसेटिक और कैरियोपाइलस और क्रॉस सेल स्टोमेटा. ठीक है, याद रखना. पैरासिटिक किसमें होता है? सेन्ना, कोका एंड रुबेशियस प्लांट. डायसेटिक किसमें होता है? वसका, तुलसी, स्परमिंट, पेपरमिंट एंड लेबेट सेल. तीसरा आता है आपका अनिसोसाइटिक स्टोमेटा. Anisocytic stomata they are also known as a cruciferous stomata or unequaled celled stomata or solanous type of stomata. ठीक है, देखो क्या अरेंजमेंट क्या है इसमें. गार्ड सेल्स आर सराउंडेड बाय थ्री सबसिडियरी सेल्स. ठीक है, यहाँ पे देखो गार्ड सेल्स आर सराउंडेड बाय, ये गार्ड सेल्स है, दे आर सराउंडेड बाय थ्री सबसिडियरी सेल. कौन से? ये एक हो गया, ये दो हो गए, ये तीन हो गए. आउट ऑफ वन विच इज स्मॉल. Okay. So guard cells are surrounded by three subsidiary cells. Amongst one is a smaller than other. Okay, known as a anisocytic stomata, also known as a cruciferous stomata, also known as a unequal cell stomata, also known as a solanous stomata. ये synonyms के ऊपर क्वेश्चन आता है. Anisocytic stomata is also known as. Now they are found in the Solanaceae family. For example, Datura, Belladonna, AIIMS, Tomium, tobacco. ये सब में क्या है? सोलेनियसी फैमिली के प्लांट है ये. दतुरा, ओके, देन बेलाडोना, स्टोमियम, आयोसाइमस, निगर, देन टोबैको. All these plants they plant belong to family Solanaceae. They will have anisocytic stomata. Okay. Next होता है आपका अनोमोसाइटिक स्टोमेटा. अनोमोसाइटिक स्टोमेटा आर आल्सो नोन एज राउंकुलेशियस स्टोमेटा और इरेगुलर सेल्ड स्टोमेटा. इरेगुलर सेल्ड स्टोमेटा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं दो बार. सो राउंकुलेशियस और अनोमोसाइटिक और इरेगुलर सेल्ड स्टोमेटा. स्टोमा इज सराउंडेड बाय वेरिंग नंबर ऑफ सेल्स रिजेंबलिंग टू अदर इपिडर्मल सेल्स. है ना, बहुत सारे सेल्स होते हैं. एग्जांपल इज नथिंग बट द डिजिटलिस, यूकैलिप्टस, लोबियला एंड नीम. तो क्वेश्चन इसके ऊपर ही आता है. डिजिटलिस एज अ व्हिच टाइप ऑफ स्टोमेटा? There's a anemocytic stomata or ranunculus stomata or irregular celled stomata. ठीक है, यूकैलिप्टस, नीम, लोबेला एंड डिजिटलिस. लास्ट ओके. नेक्स्ट आता है आपका एक्टिनोसाइटिक स्टोमेटा. एक्टिनोसाइटिक स्टोमेटा आर आल्सो नोन एज रेडिएट सेल्ड स्टोमेटा. क्यों बोलते हैं रेडिएट सेल्ड? स्टोमा इज सराउंडेड बाय सर्कल ऑफ रेडिएटिंग सेल्स, है ना. सो दैट्स व्हाई रेडिएट सेल स्टोमेटा. इसका एग्जांपल है Wuha urshi. Name. Special type of stomata is there known as a sunken type of stomata. GPAT में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. So specialized stomata to prevent the excessive water loss in case of desert. Desert में कौन सा प्लांट होता है? Desert में होता है आपका इपेड्रा, then agave and oleander. Okay. So इपेड्रा consists of a sunken type of stomata or sunken type of stomata. It is a specialized stomata to prevent the excessive water loss in the desert plant. तो देखो एग्जांपल इसका है इपेट्रा. इसके ऊपर भी क्वेश्चन नाइपर में जीपीएट में बहुत बार आ चुके हैं. टेबल इंपॉर्टेंट है, ये यू हैव टू नो.